medieval history is concerned, we have to depend upon some sources. इतिहास रो जेमति उपादान जहा हम कहली, in order to know about the history of a particular period, we have to depend upon some sources. The sources are mainly divided into 2 to 3 categories, like the archaeological source, literary source, and the foreign accounts. साहित्यिक उपादान, तापर रहिला प्रत्नतात्विक उपादान एवं वैदेशिक पर्यटक मानक विवरणी. So far as the literary source is concerned, we have to depend upon the books which are composed, or the literary sources which give information regarding the history of a particular period. साहित्यिक उपादान माने सेही समय जो साहित्यिक माने अछंती, सेही समय जो लेखक बा कवि माने अछंती, से माने जहा जहा अनुभव करछि, जहा जहा लिखिछंती regarding the political history, social history, economic history, and the religious history, they give us information about the history of the particular period. Besides the literary source, we have to depend upon the archaeological evidences, like the archaeological excavation works or the monuments which are constructed in different parts of the country. They also give us information regarding the history of a particular period. सेही समय तत्कालीन जो कीर्ति कलाप रही, जो कीर्तिराजी रही, they give us information regarding the history of that period. ता छड़ा we have to depend upon the foreign travelers who have visited our country from time to time. जो वैदेशिक पर्यटक माने आम देश को विभिन्न समय भ्रमण रे आछथि, whatever they have seen, they have written down in their own diary, their own eyewitness account, their experiences. They are also the most valuable sources of information of history of a particular period. So in general, these are the different types of sources on which we have to depend upon in order to know about the history of the medieval India. So the entire history of medieval India, we can divide it into 2 parts, that is early medieval age and later medieval age. Early medieval age, we can roughly divide it into from 700 to 1206 AD, 700 খ্রিস্টাব্দ বা advent of the Arab invasion of Sind, advent of the Muslims, সেটা আরম্ভ করি 1206 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমি তো কই দেই পারিবা, that is the early medieval period. Then the latter medieval age, which continued from 1206 to 1526, that is the Mughal period, mainly the Mughal period. Mughal ইতিহাস আরম্ভ হইতিলা 1526 খ্রিস্টাব্দে, that is the third phase of our history. So early medieval age and latter medieval age, it is divided, medieval history can be divided into 2 parts, Sultanate period and Mughal period. तेणु 700 ख्रीष्टाब्द आरंभ करी 1526 पर्यंत थिला, that is the Sultanate period, and from 1526 we entered into the second phase of medieval India, that is the Mughal age. And after 1526 there was it continued till the death of Aurangzeb in 1707. Babur, Sher-Shah, Bangale, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. So they are known as the greater Mughal rulers. And after the death of Aurangzeb, those who came, they are known as the latter Mughal rulers. माने महान मुगल सम्राट एवं परवर्ती मुगल सम्राट. As long as Aurangzeb was alive, the Mughal empire was united. And after the death of Aurangzeb, the subsequent rulers, those who came, those who occupied the Mughal dynasty, Mughal throne, they had their political and military weakness. And in the meantime, the British, they have already entered into India. They have already started their trade and commercial activities from 1615, from the time of Jahangir. Jahangir का समय सार टोमास का समय इंग्रेज माने भारत रे वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करी सारिचंती from 1615, having the permission from Jahangir. So from 1615 till 1707, they could not venture to invade India. They only remained in India as a trader. केवल बणिक भाव में से वाणिज्य कारोबार संपर्क स्थापन करथिले 1615 ख्रीष्टाब्द आरंभ कर 1707 ख्रीष्टाब्द पर्यंत. They could not venture to face the challenges of Aurangzeb because Aurangzeb, he was alive till 1707. 1707 ख्रीष्टाब्द Aurangzeb मरि गले. So when Aurangzeb died, the last of the greater Mughal rulers, the subsequent Mughal rulers, the successors of Aurangzeb, they had their political and military weakness. They are not as great as that of their ancestors. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb का परी सेमाने सुदृढ़ नथिले. They are not politically stable. They are not militarily stable. So and they enjoyed their life like anything. So they led a very luxurious life. So taking the advantage of their weakness, the Britishers, they thought to invade India. And the year came in 1757 when the British Empire it has established India, the foundation stone of the British rule in India. They came to India as the trader, but they ruled over India from 1757 for the next 200 years, nearly 200 years, when we achieved our independence in 1947. So सेटा होछि second part आमे पढ़िबा. So in order to know about the history of the medieval period, we have to depend upon some sources. तारे medieval history जो पढ़िले आमे जानिले ता भितर को माने थिले, who are the rulers in the during the medieval period. Early medieval age को माने थिले the Sultanate period. Sultanate period, it has started from the establishment of the slave dynasty. Slave dynasty तक हमें Mamluk dynasty बोली कहउतला. So Mamluk dynasty, it has otherwise known as the slave dynasty. From Mamluk dynasty,
मु खाली कहि दिए को माने अछंती रूलर्स कोन कोन को डायनेस्टी कोन कोन तापर हम जिबा सोर्स खाली आइडिया है जो हां ए माने थिले अर्ली मीडिया भल ए माने थिले लाटर मीडिया भल दे आर द रूलर्स दे आर द एम्परर्स तापर जिबा हम सेमान कर सोर्स पढिया पे कोन कोन सोर्स हम पाके अछि सो द मामलुक डायनेस्टी और इट इज अदरवाइज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी स्लेव तो कमे स्लेव बा दास वंश बोले हम कहउछथि स्लेव डायनेस्टी बोले कह जाउछ सो हु आर द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक जितेबले अरब माने सिंधु अधिकार करी गले तापर आरंभ होइतिला जो डायनेस्टी दैट इज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी दे रूल्ड ओवर इंडिया एंड दैट इज नोन एज द मामलुक डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ही रूल्ड फ्रॉम ही एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी 1206 ख्रीष्टाब्द 1210 पर्यंत कुतुबुद्दीन ऐबक ही रूल्ड ओवर इंडिया तांका परे आसले इल्तुतमिश ही रूल्ड फ्रॉम 1211 to 1236 इल्तुतमिश ही रूल्ड फ्रॉम 1211 to 1230 1211 रु 1236 पर्यंत थिले इल्तुतमिश शासन करथिले तापर के शासन कले ना सुल्तान रेजिया फ्रॉम 1236 to 1240 1236 रु 1240 पर्यंत सुल्तान रेजिया तापर आसले बलबन ही रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1246 to 1286 बलबन शासन करथिले सो एमाने थिले स्लेव डायनेस्टी रो सो द स्लेव द मामलुक डायनेस्टी व्हिच इज अदरवाइज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी दे स्टार्टेड देयर रूल इन इंडिया फ्रॉम 1206 to 1286 कुतुबुद्दीन ऐबक ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी हु रूल्ड फ्रॉम 1206 to 1210 1206 रु 1210 पर्यंत थिले कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक द नेक्स्ट रूलर ही वाज इल्तुतमिश हु रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1211 to 1236 सुल्तान रेजिया सी रूल्ड फ्रॉम 1236 to 1240 देन बलबन गियासुद्दीन बलबन से शासन करथिले 1246 से 1286 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सो दिस इज अबाउट द रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी और द मामलुक डायनेस्टी तांका परे को माने असले इट वाज आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी द नेक्स्ट रूलर दैट इज द खिलजी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी द फर्स्ट रूलर वाज who was the first ruler of the Khilji dynasty ताका नाम होची कोन जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी he ruled from 1290 to 1296 जलालुद्दीन खिलजी after जलालुद्दीन खिलजी Alauddin Khilji occupied the throne Alauddin Khilji from 1296 to 1316 though Jalaluddin Khilji was the first ruler of the Khilji dynasty yet Alauddin Khilji he is said to be the real founder of the Khilji dynasty Jalaluddin Khilji thile prathama shasaka sultan tanko kintu Alauddin Khilji ko kintu kaha jauchi it is because of his greatness it is because of his conquest so Alauddin Khilji he has been regarded in history as the real founder of the Khilji dynasty question jem tumar padithila parikha re Chodaganga Deva was the first the founder of the Ganga dynasty. He was not the founder, but it is because of his political achievements. It is because of his conquest. It is because of his administration. It is because of his cultural developments. तांका में चोड़गंगा देवं कहउछथि से होछथि गंगा dynasty प्रकृत प्रतिष्ठाता. But he was not the real founder. But it is because of his greatness. It is because of his political conquest. It is because of his administrative system. It is because of his economic or social condition. Stable condition it was there during his time so Chodaganga Deva he is regarded as the real founder of the Ganga dynasty simply Alauddin Khilji he was not the founder of the Khilji dynasty the first ruler the first sultan he was Jalaluddin Khilji but Alauddin Khilji he has been regarded as the real founder of the Khilji dynasty it is because of his conquest it is because of his administration Alauddin Khilji को कहा जाउची प्रकृत प्रतिष्ठाता थिले Khilji dynasty रो अच्छा तापरे आसिला के तुगलक dynasty Khilji dynasty pare the next they came they are the Tughlaq dynasty ना ना क्वेश्चन आसीबनी क्वेश्चन आसीबो तो माने Alauddin Khilji he was not the real founder क्वेश्चन आसीबो एम्ति justify Jalaluddin Khilji Alauddin Khilji he was not the founder जदि क्वेश्चन आसे तमर जदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रे पडिला एटा त एमसीक्यू रे पडिला अलग जिंस तुम जो दीटा थिला हम कार्ड लिखि बोल जदि डिस्क्रिप्टिव रे पडियो जस्टिफाई Alauddin Khilji as the real founder of the
खिलजी डायनेस्टी ताले तुम अलाउद्दीन खिलजी को जस्टिफाई करिवो जेमति क्वेश्चन एथर परीक्षा देइथिलो ना तुमे दिन तुम ऊपर बैच देइथिले कोन नहीं ऊपर बैच तुम जो परीक्षा चलछला नेइथिली खतम देखिया पई सेतरे सब लेक्चर क्वेश्चन हम देइथिली जे जस्टिफाई चोडगंगा द रियल फाउंडर ऑफ द गंगा डायनेस्टी चोडगंगा हम काहे कि गंगा डायनेस्टी प्रकृत शासक बोली प्रतिष्ठाता बोली कहउछथि तार जस्टिफाई द अचीवमेंट्स ऑफ चोडगंगा देव आ द रियल फाउंडर ऑफ द गंगा डायनेस्टी तो ताकर कंक्वेस्ट कोन थिला एडमिनिस्ट्रेशन कोन थिला कल्चरल डेवलपमेंट चोडगंगा देव समय कोन हितिला टेम्पल आर्किटेक्चर कोन थिला he was the builder of the Jagannath temple ए सब गुडा ता भितर रहिले he is considered as the real founder किंतु रियल फाउंडर से नथिले why we will consider him as the real founder it is because of his greatness it is because of his achievements so तापर असला तुगलक डायनेस्टी तो तुगलक डायनेस्टी it was established by Ghiyasuddin Tughlaq Ghiyasuddin Tughlaq he ruled from 1320 to 1325 Ghiyasuddin Tughlaq तापर आसिले मोहम्मद बिन तुगलक हम एगुडा तो डिटेल पढिबा मोहम्मद बिन तुगलक फ्रॉम 1325 to 1351 मोहम्मद बिन तुगलक तापर आसिले फिरोज तुगलक Firoz Tughlaq from 1351 to 1388. So after the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty was established, and Ghiyasuddin Tughlaq, he was the founder of the Tughlaq dynasty. Muhammad bin Tughlaq, he has been regarded as a failure. मोहम्मद बिन तुगलक को फेलियर बोली कह जाउची जेतोडे स्टेप नैथिले सब तक स्टेप रे से फेल मारि गइथिले विफल होइथिले तांका परे आस्थिले फिरोज शाह तुगलक इट ही कंटिन्यू टिल 1388 तांका परे जोन आस्थिले सेथिले सईद डायनेस्टी पर सईद डायनेस्टी दैट डिड नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द medieval history of India then the another powerful dynasty they are the Lodi dynasty सईद डायनेस्टी पर आस्थिले लोदी डायनेस्टी in the medieval history Bahlul Lodi he was the first ruler of the Lodi dynasty Bahlul Lodi who ruled from 1451 to 89 Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi Sikandar Lodi, he ruled from 1489 to 1517 and the last ruler was Ibrahim Lodi. The last ruler of the Lodi dynasty, he was Ibrahim Lodi, who ruled from 1517 to 1526 and it is after the defeat and death of Ibrahim Lodi that the Sultanate period it came to an end and there started another phase of history in the medieval India that is known as the Mughal rule. Babur and Ibrahim Lodi, the first battle of Panipat which took place in 1526, Ibrahim Lodi he was defeated and the Mughal rule in India it was started. So this is the Sultanate period. As we have divided the entire medieval history into two parts, the Sultanate period and the Mughal period, and it is with the death of Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat at 1526 that Sultanate rule it came to an end. Sultani जुगर भारत रे अवसान होइतिला एवं परवर्ती शासन आरंभ होइतिला मुगल शासन it was started from the year 1526 and it continued till 1707. प्रथमे आसिले बाबर का परे आसिले शेरशाह मचिरले सु डायनेस्टी रो तापरे आसिले हुमायून तापरे अकबर Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb, and it was with the death of Aurangzeb in 1707 that the disintegration of the Mughal empire it was started. मुगल साम्राज्यर पतन आरंभ हो गला औरंगजेब मृत्यु पर अर्थात 1707 ख्रीष्टाब्द and it has completely destroyed, it has completely vanished with the establishment of the British rule in India. भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा होइतिला 1757 ख्रीष्टाब्द रे. It was after the victory in the battle of Pallavas by the British. तेणु 1757 ख्रीष्टाब्द बेलकु भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य रो आरंभ होइतिला. But the last of the Mughal ruler,
he continued till another 100 years. शेष मुगल सम्राट किए थिले बहादुर शाह जाफर in 1857 1857 मसीहा पर्यंत बहादुर शाह जाफर he was the last of the Mughal ruler. तेनु सुल्तानेट पीरियड हम जो देखले सुल्तानेट पीरियड ती बुझिला ए माने सु थिले जो माने द रूलर्स द क्रोनोलॉजी काहपरि के कोन शासन करथिले. So in order to know about the history of the sultanate period we have to depend upon some sources. The sources are mainly the literary source. First of all we will take up the literary source. साहित्यिक उपादान कोन रहिछि in order to know about the sultanate period. The literary sources of the medieval history. मध्ययुग भारतीय इतिहास रो जानिया पई हमकरे literary source कोन अछि. Literary source रहिछि archaeological remains रहिछि plus numismatic evidence बा coins रहिछि. So literature, archaeology including the coins, they give us and the foreign accounts, they give us information regarding the history of the sultanate period of the medieval first phase of the medieval history. अच्छा प्रथम literary source हम पाखे रहिछि कोन चाचमान. It is a book. चाचमान होछि गोटे ग्रंथ. तो किए लिखछन्ती who was the author of the book and what he has described in that source of history. चाचमान जो ग्रंथटा लिखिछन्ती बही लिखछन्ती this work it deals with the history of the indigenous ruling dynasty of Sind on the eve of Arab invasion. अरब मानकर जो सिंधु अधिकार होइतला 712 ख्रीष्टाब्द रे अरब मानकर सिंधु अधिकार समय अव्यवहित पूर्वरु what are the condition of Sind. सिंध रा कंडीशन कोन थिला सिंधु प्रदेश रा कंडीशन कोन थिला अवस्था कोन थिला जा फले कि अरब माने प्रथमे सिंधु प्रदेश अधिकार कले 712 ख्रीष्टाब्द रे. दैट इज द रिलेटिंग टू द हिस्ट्री ऑफ सिंध ऑन द ईव ऑफ द अरब इन्वेजन. चाचमान जो बही ग्रंथ अछि सेथिरे हम कोन सूचना मिलुची वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिंध ऑन द ईव ऑफ द इन्वेजन ऑफ द अरबियंस. अरब माने जो 712 ख्रीष्टाब्द रे सिंधु प्रदेश अधिकार कले ता पूर्वरु सिंधुर राजनीतिक अवस्था कोन थिला द व्हाट आर द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सिंध इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन चाचमान. ताको लिखि चंदी कि ताका विषय कोनसी सूचना हम पाखे नाही. ता हु वाज द ऑथर ऑफ चाचमान we do not have any information. That book is there but we do not know about the author of the book which is written which is known as चाचमान. ताको अन्य प्रकार में कहि दी परिबा it is also known as चाचमान. It's otherwise known as फतेहनामा सिंध. चाचमान is also known as फतेहनामा सिंध. एमती गोटे क्वेश्चन भी पड़ी पारे Chachnama is the book which gives us information regarding the history of Sind on the eve of Arab invasion. Arab मानकर सिंधु आक्रमण पूर्वरु सिंधुर राजनीतिक अवस्था कोन थिला से विषय में सूचना मिलुची चाचमान नामक ग्रंथरु. It is otherwise known as फतेहनामा सिंध but so far as the author of the book is concerned we do not have any information in history. ताको प्रकृति किए लिखिचंती हम ता विषय के अंतर की धारणा नहीं. But Ali Kufi he has translated the Chachnama or फतेहनामा सिंध into Persian. Persian language रे ट्रांसलेट करचंती जे ताका नाम होची अली कुफी. He has translated the book into Persian language. एटी बुझेला गोटे दैट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. medieval history रा गोटे लिटरेरी सोर्स हला चाचमान. तापर हम जिबा अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हां so far as the author is concerned, so far as the writer is concerned, we do not have any information with us. It is also otherwise known as फतेहनामा सिंध and it is translated into Persian language by Ali Kufi. It gives us information regarding the history of Sind. सिंधु प्रदेश रा इतिहास विषय हमको सूचना मिलुछि. तापरे आउ जणी थिले ऐतिहासिक ताका नाम होछि कोन अल-बिरुनी the historian. से कौन लिखिचंती
तारिख उल हिंद, तारिख उल हिंद और किताब उल हिंद ना गुड़ा टिके मन रखिबो। एमती कॉलम ए कॉलम बी करके मैच द फॉलोइंग भी कर पड़ी पारे, बुक्स एंड ऑथर्स एमती भी पड़ी जाई पारे मैच करिया पई। अल-बिरुनी he was one of the greatest intellectuals of 11th century. Al-Biruni, he was the one of the greatest intellectuals of the 11th century, and he was also a great historian. He has written the book Tarikh ul Hind. It is otherwise known as Kitab ul Hind. Tarikh ul Hind बा Kitab ul Hind नामक बही लिखचंती। सेथे से कोन जोर दर्शाइचंती। He was also, जो Al-Biruni, he was also known as a theologian, a theologian, theologist. थियोलॉजिस्ट कौन? थियोलॉजी कौन? थियोलॉजी ओडिया कौन? माने जो घटना चिरंतन सत्य ताकु जे विश्वास करते, ही कैनॉट चेंज, वी कैनॉट चेंज व्हाट इज इटर्नल ट्रुथ। जो माने विश्वास करते इटर्नल ट्रुथ ऊपर, जो होती चिरंतन सत्य ता ऊपर से जो माने कि चैलेंज करती नाही, दे आर नोन एज द थियोलॉजिस्ट। को आदिम काल रु जहां अछि ताहा सत्य, चिरंतन सत्य जोटा इटर्नल ट्रुथ, दे बिलीव ऑन द इटर्नल ट्रुथ, दे आर नोन एज द थियोलॉजिस्ट। सो Al-Biruni, he was a theologist, he was also a philosopher, he was also a mathematician. He belonged to 11th century. आउथर कह दोजी। So Al-Biruni, the great intellectual, one of the greatest intellectuals of 11th century, he has also been regarded as a great historian. He has written the book that is Tarikh ul Hind, which is otherwise known as Kitab ul Hind. Tarikh ul Hind जहाँ को क्या मैं Kitab ul Hind बोली मतलब कही पारचंती। Say Al-Biruni, he is also a theologist, he is also known as a philosopher, he is also a great mathematician as well as an astronomer. ज्योतिष शास्त्री. So these are the credits of Al-Biruni. He has written the book Tarikh ul Hind and Kitab ul Hind. इंटेलेक्चुअल माने बुद्धिजीवी, ताके हम ओडिया रे बुद्धिजीवी बोली कहउछन। दार्शनिक, फिलोसोफर रे दार्शनिक, एस्ट्रोनॉमर हेले ज्योतिर्विद, और मैथमेटिशियन हेले गणितज्ञ, एते गुडी तांकर थिला क्वालिफिकेशन। So he was a great mathematician, he was a great philosopher, he was a great theologist, a great astronomer, he was also a great historian of 11th century. He was also known as one of the greatest intellectuals of that time. से समय जने महान बुद्धिजीवी थिले। अच्छा, से कौन लिखिचंती? Al-Biruni जो तारीख की हिंद, किताब उल हिंद, इथरे व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, इथरे से कौन दर्शाइचंती? What information that book gives us? Sultan Mahmud. सुल्तान मामूद कर इंडियन एक्सपेडिशन। सुल्तान मामूद के कितने थर भारत आक्रमण करथिले? सुल्तान मामूद ऑफ गजनी 17 टाइम्स, 17 थर भारत आक्रमण करथिले। सुल्तान मामूद ऑफ गजनी, ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। सेटा होची 1008 पर्यंत थिला, स्ट्रेच हिथिला। हाँ, सोमनाथ टेम्पल पर्यंत, सोमनाथ टेम्पल टा भी इन्वेजन ऑफ सोमनाथ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, मामूद ऑफ गजनी। तेन से 11th सेंचुरी रो, ये बिलोंग करछ 11th सेंचुरी रो। तेन सुल्तान मामूद होचंती से 11th सेंचुरी रो, 1008 ख्रीष्टाब्द बोधे सुल्तान मामूद, 1008 सुल्तान मामूद ऑफ गजनी देखिबा। सो ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द इन्वेजन ऑफ सुल्तान मामूद एई बुक रे, तारिख उल हिंद और किताब उल हिंद, दैट इज द best example of the invasion of Sultan Mahmud of his Indian expedition.
अच्छा तापर आउ जने हिस्टोरियन की अछंती आउ जने आउ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउ कोन छै हम पाखरे लिटरेरी सोर्स भितरे आउटला ताज उल मासिर ताजुल मासिर ये ऑथर ना ना नेम ऑफ द बुक कहूची किताब उल हिंद पर्शियन लैंग्वेज पारसिक भाषा हाँ हाँ वही पर किताब उल हिंद किताब माने कौन क्यों किताब किताब उल हिंद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू इंडिया हिंदुस्तान हिंद जो है हिंदुस्तान किताब है बुक सुल्तान मेनली इट डील्स विथ द इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी सुल्तान महमूद जो 17 भारत आक्रमण कले ताकू बेस करके से बड़े से लिखछन दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम तो महमूद के विषय पढ़िया मीडिएवल इंडिया रे तो दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तापरे आ गोटे बुक हैला ताज उल मासिर दैट इज द बुक इट वाज रिटन बाय हसन निजामी Hasan Nizami, he is the author. The book is Taj-ul-Masir. It was written by Hasan Nizami. एथरे से कौन देखे चुंदी एथरे what information he gives on this book. Qutbuddin Aibak. He has described about the achievements of Qutbuddin Aibak. कुतुबुद्दीन ऐबक का कृतित्व विषय रे से सेतरे दर्शाइछन्ती हिस्ट्री ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ता छडा मोहम्मद घोरींकर भारत आक्रमण तो एक्सपेडिशन ऑफ मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद घोरी सेमानकर एक्सपेडिशन विषय रे लिखिछन्ती हसन निजामी इन हिज बुक ताज उल मासिर दैट इज अनदर political history that is another book which gives us information regarding the conquest of Qutbuddin Aibak and Muhammad Ghori Qutbuddin Aibak कर कृतित्व और मोहम्मद घोरी कर आक्रमण ए विषय हम सूचना दउची ताज उल मासिर नामक बही इट वाज रिटन बाय हसन निजामी एटा को भाषा रे लिखाई छी हां पर्शियन as well as Arabic both this book it is written in Persian as well as in Arabic language पारसिक भाषा और अरब लैंग्वेज अरबिक भाषा रे लिखा जाई से बहिटा तापर आ गुटे बही आसिला पॉलिटिकल मा लिटरेरी सोर्स से हला तबाकत-इ-नासिरी एटा गुटे क्वेश्चन टा आसीथिला तबाकत-इ-नासिरी तबाकत-इ-नासिरी इट इज एथरे बुक की ऑथर के एटा तो कंफ्यूज करिवो व्हिच इज द बुक एंड हु इज द ऑथर तबाकत-इ-नासिरी होची बुक इट वाज रिटन बाय मिनाज अल सिराज लिखिचुदी बहिटा तबाकत-इ-नासिरी दैट इज अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एथे से कोन दर्शाइचंती Tabaqat-i-Nasiri. It was written by Minhaj al-Siraj. It deals with the birth of Islam, origin of Islam. It deals with the origin of Islam. Islam धर्म रो आरंभ केमती हितिला. The history of the Islam religion or Islamic religion. Islam धर्म रो जो आरंभ केमती हितिला. आरंभ केम beginning of the Islamic religion. आउ कौन थिला खलीफा so Tabaqat-i-Nasiri it is a book written by Minhaj al-Siraj. It describes about the origin of Islam. Islam धर्म रो आरंभ origin of Islam ताछड़ा और खलीफा के खलीफा बोली कहउचंती
खलीफा किए द रिलीजियस हेड आम चीफ प्रीस्ट हम जेमती कहउछंती द चीफ ऑफ द इस्लामिक रिलीजन ही इज नोन एज खलीफा और खलीफ व्हाट आर द रोल ऑफ खलीफ and what are the origin of Islam it has been described by Minhaj al-Silas in his book that is Tabaqat-i-Nasiri तापरे देखिए आउ कोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेरी सोर्स आउ कोन रही अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन that is by Amir Khusrau Amir Khusrau he has a great से कोन कोठिकार लोक से थिले हैं पर्सन he belonged to India Amir Khusrau हाँ Indian poet Amir Khusrau so Amir Khusrau he was an Indian scholar से लिखिछथि हिस्टोरिकल बुक्स छटा हिस्टोरिकल बही लिखिछथि so Amir Khusrau he has written 6 books historical books Amir Khusrau from 13th to 14th century. So he has written 6 books, historical text. छटा ऐतिहासिक बही से लिखिछथि. He belonged to 13th century. He was an Indian poet, a great scholar, and he served in the royal court of beginning from Balban to Tughlaq. जो बलबन डायनेस्टी गियासुद्दीन बलबन गियासुद्दीन तुगलक पर मोहम्मद तुगलक में पढ़ी सो गियासुद्दीन बलबन ठू आरंभ करी गियासुद्दीन तुगलक पर्यंत सी समस्त राजसभा थिले जने कवि ताको कौन कहा जाए ही हैज गॉट ए टाइटल टूटी ए हिंद एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे अमीर खुसरो सहित रिलेटेड माने प्रिलिम कथा कहूँ he has been described as टूटी ए हिंद what does it mean a great poet a great scholar he was Amir Khusrau he served in the royal court of from Ghiyasuddin Balban to Ghiyasuddin Tughlaq Balban dynasty रो गियासुद्दीन का ठारू आरंभ करी तुगलक डायनेस्टी गियासुद्दीन का पर्यंत तामा समस्त राजसभा से जणिथिले कवि ही आर द पोएट इन द रॉयल कोर्ट ऑफ गियासुद्दीन बलबन फ्रॉम टू गियासुद्दीन तुगलक एंड ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज टूटी ए हिंद व्हाट डज इट मीन दैट इज द टाइटल दैट इज द डेजिग्नेशन व्हिच हैज कन्फर्ड ऑन हिम तांको गोटे उपाधि दिया हितिला टूटी ए हिंद पॉपुलरली नोन एज टूटी ए हिंद तार अर्थ होछि कोन हिंदुस्तान रो पैरट ऑफ इंडिया राज्यसभा रे तांको उपाधि मिलिथिला नाही सेमति किछ नाही से बलबन को ठारो तुगलक डायनेस्टी पर्यंत थिले से समय तांको टूटी इट इज बिकॉज ऑफ हिज पोएटिक एक्टिविटीज जो कविता माध्यम रे ही इज ए ग्रेट पोएट सेथिमे तांको टूटी ए हिंद बा पैरट ऑफ इंडिया बोली तांको दिया जायतिला से कोन लिखे छथि मुख्य ग्रंथ तांकर कोन थिला तारीख-ई-इलाही तारीख-ई-इलाही दैट आर द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ अमीर खुसरो तारीख-ई-इलाही दैट इज द ग्रेटेस्ट वर्क तांको सबुठारु बड़ कृति तो थिला तारीख-ई-इलाही बड़ ग्रंथ से लिखि छथि से कौन डिस्क्राइब कर कहा विषय लिखिं
अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी विषय लिखा जाइए तारिख इ इलाही रे से डिस्क्राइब करछन्ती रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ता छडा से आउ गोटे बही लिखिछन्ती ता ना होची कोन तुगलकनामा तुगलकनामा इज अनदर वर्क ऑफ अमीर खुसरो तारिख इ इलाही it describes about the achievements of Alauddin Khilji अलाउद्दीन खिलजी का कृतित्व तारिख इ इलाही सेमती कि नहीं दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज द टेक्स्ट से पोएटिक टेक्स्ट की प्रोज स्टाइल वी डू नॉट नो बट दैट इज द कंट्रीब्यूशन दैट इज द टेक्स्ट रिटन बाय अमीर खुसरो गोटे हला तारिख इ इलाही सेटा कोन डील करछि सेटा खाली मन रख तारिख इ इलाही द बुक रिटन बाय अमीर खुसरो इट डील्स विथ द अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आ गोटे बही से लिखिसंती दैट इज नोन एज तुगलकनामा it gives us information regarding the history of Ghiyasuddin Tughlaq ये जो गियासुद्दीन तुगलक का पर्यंत से थिले तांका राज्यसभा रे तांका विषय हमहु सूचना दोछि तुगलकनामा इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ गियासुद्दीन तुगलक आथरे कहि दोछि जा हम कहले सो अमीर खुसरो he was an Indian poet who belonged to 13th and 14th century he has written 6 historical books the most prominent being तारिख इ इलाही एंड तुगलकनामा जो 6टा बही लिखिसंती ग्रंथ ता भीतर सबुठार मुख्य थिला तारिख इ इलाही एंड तुगलकनामा तारिख इ इलाही इट डील्स विथ द अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी व्हेयर एज द तुगलकनामा इट डील्स विथ द गियासुद्दीन तुगलक एंड ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द टुटिया हिंद और द पैरेट ऑफ इंडिया ताको पैरेट ऑफ इंडिया बा टुटिया हिंद बोली उपाधि रे घोषित कराइथिला सी पॉपुलरली नोन एज टुटिया हिंद और पैरेट ऑफ इंडिया हां एटा खाली माने लॉन्ग क्वेश्चन अपेक्षा एटा सब शॉर्ट क्वेश्चन पई इंपोर्टेंट ए चैप्टर डाको शॉर्ट क्वेश्चन पई माने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू प्रीलिम्स पई ताको सोर्स तुगलकनामा इट डील्स विथ गियासुद्दीन तुगलक काहेकि ना से अलाउद्दीन खिलजी मठरे आरंभ करी बा बलबन मठरे आरंभ करी अलाउद्दीन खिलजी प्लस गियासुद्दीन तुगलक समस्त राज्यसभा से थिले तेनु व्हाटएवर ही हैज सीन ही हैज रिटन इन हिज ओन अकाउंट्स इन हिज ओन टेक्स्ट बुझिला तो एटा ते जे एई बही रे काहे कि लिखिले अलाउद्दीन खिलजी के विषय रे तुगलकनामा रे काहे लिखिले गियासुद्दीन तुगलक विषय रे से तो दीटा का डिफरेंट पीरियड रो तो अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक because he stayed he remained in the royal court of the sultans beginning from Ghiyasuddin Balban to Ghiyasuddin Tughlaq Balban dynasty Khilji dynasty Tughlaq dynasty ये सब राज्यसभा गुड़ाक से थिले so he has written about Alauddin Khilji in तारिख इ इलाही and तुगलकनामा रे गियासुद्दीन तुगलक के विषय वर्णना कराई से लिखिसंती ता ये गला एटा तापर देखा नेक्स्ट जियाउद्दीन बारानी खाली बारानी बोली भी हाँ तो फुल नेम होची जियाउद्दीन बारानी सी ही पॉपुलरली नोन एज बारानी से कौन लिखचंती जियाउद्दीन बारानी से पुनी के he is the contemporary the greatest of all the contemporary historians of medieval India तारिख इ फिरोज शाही तारिख इ फिरोज शाही that is the text that is the book Ziyauddin Barani he is a great scholar he has written Tarikh i Firoz Shahi इथे कौन लिखछन से ना पूरा टोटल हिस्ट्री ऑफ द सुल्तानेट रूल सुल्तानेट पीरियड हिस्ट्री ऑफ सुल्तानेट रूल एटा होची तारिख इ फिरोज शाही रा चीफ कंटेंट ऑफ द बुक
हिस्ट्री ऑफ द सुल्तानेट रूल पूरा सुल्तानी शासन जो 100 वर्ष पाखापाखि सुल्तानेट रूल थिला फ्रॉम 1250 पाखापाखि टू 1350 पर्यंत सही समय सुल्तान रूल दैट इज डिस्क्राइब्ड इन तारीख ई फिरोज शाही दैट इज द बुक रिटन बाय जियाउद्दीन बारानी से आ गोटे बही लिखिछंती ता ना होची ए ना ओडा तो किछि भी मोर मने रहउनी फतवा ई जहानदारी that is another book written by Ziyauddin Barani फतवा ई जहानदारी सितरे कोन ई डील्स विथ कोन सितरे अछि सितरे इंफॉर्मेशन कोन अछि सितरे अछि एडमिनिस्ट्रेशन इतरे अछि पॉलिटी रिलीजियन तापर होची स्टेट क्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन of the Sultanate period. So Ziyauddin Barani, he was another scholar whose greatest text is Tarikh-i Firoz Shahi. এই বইটা সে লিখেছেন Tarikh-i Firoz Shahi. It deals with the history of the Sultanate period, Sultanate rule. Besides Tarikh-i Firoz Shahi, he has written Fatwa-i-Jahandari. Fatwa-i-Jahandari বলে আউট গ্রন্থ লিখেছেন, আউট বুকস লিখেছেন টেক্সট. It deals with the polity, religion and statecraft of the Sultanate period. সেই সুলতান যুগর রাজনীতি প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং সেই সময়ের সুলতান যুগর যে ধর্ম তাকে নেইকি সে লিখিছেন ফতোয়া ই জাহানদারি নামক আর গোটে বহি তাছাড়া আর গোটে বহি তাঙ্কর হচ্ছে Ziyauddin Barani, he has also written Futuhat-i Firoz Shahi. That is another text, another book of Ziyauddin Barani. Futuhat-i Firoz Shahi. No, no. Coach. Eti khali eta chhad do. So Ziyauddin Barani, he has written the book that is Tarikh-i Firoz Shahi. The text it deals with the history of the Sultanate rule. Besides, he has also written the book that is Fatwa-i-Jahandari that deals with the polity, religion and statecraft during the Sultanate period. Eti khali mane rakho eta nuho. Eta am kahibi. It is not written by Ziyauddin Barani. It is an autobiography. ये होता आत्मजीवनी ताको किए लिखछन ना फिरोज शाह लिखछन. That is also another source of information regarding the medieval history of India. Futuhat-i Firoz Shahi, that is the autobiography written by Firoz Shah. Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq, he has written his autobiography that is known as Futuhat-i Firoz Shahi. तांकर आत्मजीवनी सेटा कहि दउ जाउ थरे. जियाउद्दीन बारानी कर गला दुईटा जिंस गोटला फतवा-इ जहानदारी आउटला तारीख-इ फिरोज शाही दैट इज द टेक्स्ट बट फतवा-इ फिरोज शाही दैट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक. So that is also gives us information regarding निज आत्मजीवन से लिखिछंती द तुगलक डायनेस्टी तुगलक राजवंश जो प्रशासनिक पद्धति कोन थिला द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक. इट इज एविडेंट फ्रॉम द बुक दैट इज ऑटोबायोग्राफी दैट इज नोन एज फतवा-इ फिरोज शाही. दैट इज अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सुल्तानेट पीरियड. His campaigns and the failure projects of Firoz Shah Tughlaq तांकर failure कोन थिला the duty of a king is the religious condition of India. Everything he has described in his autobiography. सेही समय तांकर conquest तांकर administration the religious policy which was followed in India during his time everything he has described in his own autobiography. तांकर आत्मजीवन रे ए सब सितरे से देखैछंती फिरोज शाह तुगलक वर्णना करछ that is known as फतवा-इ फिरोज शाही. ताछड़ा आम पाखे आउ गोटे बही अच्छी आउ गोटे लिटरेरी सोर्स भितर रही आमर कौन आउ गोटे इनफॉरमेशन दैट इज तारीख-इ मुबारक शाही.
तुम्हें खाली बुलेट पॉइंट खाली मार्क कर देबो ए बुक्स के ऑथर के आउ ता विषय तो डिटेल किसी दरकार नहीं पढ़िया जानिया दरकार नहीं किसी खाली दीजा तो आम खाली सोर्सेस पढ़ुचंती सो दीज आर द लिटरेरी सोर्स और द हाँ साहित्यिक उपादान कौन रही इन ऑर्डर टू नो अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द सुल्तानेट पीरियड तारीख ई मुबारक शाही ताको किए लिखिचंती that is the work written by Ahmad Sirhind. Ahmad Sirhind. He has written Tarikh e Mubarak Shahi. It has a text. Ahmad Sirhind. इथे कौन नंबर लिखिछन से कौन वर्णना करछंती what he has described मुबारक शाही शाही माने होचंती श्रेष्ठ शाही तारीख ई मुबारक शाही दैट इज द टेक्स्ट शाही माने होची बेस्ट शाही रॉयल और राजा ही तो ही बेस्ट ना शाही होची द ग्रेटेस्ट द बेस्ट जो टॉप मोस्ट पोजीशन ताको शाही बोली कह जाए तो तारीख ई मुबारक शाही that is the text written by Ahmad Sirhind इथिरे कौन लिखाई ची को डायनेस्टी विषय लिखाई ची सईद डायनेस्टी सईद डायनेस्टी छोटिया डायनेस्टी किसी अचीवमेंट बेसिक किसी ग्रेटेस्ट रोल किसी नथिला सुल्तानेट पीरियड रे सईद डायनेस्टी सो तारीख ही मुबारक दैट इज अनदर टेक्स्ट तो सईद रूलर्स जो माने से मानकर कृतित्व राजनैतिक पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ये सब लिखा जाइए तारीखी मुबारक शाही रे ये सब है द लिटरेरी सोर्स साहित्यिक उपादान द लिटरेरी सोर्स तारीखी मुबारक शाही TEXT टेक्स्ट माने बुक अहमद 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 सिरहिंद The author is Ahmad Sirhind. Ahmad Sirhind. तापर हमें देखिबा the travelers accounts, the visitors, those who have came to India during the Sultanate period or the medieval period. Travelers account. Live with me. हाँ बोलिए. ये तो अच्छा बेटा कुआडे गला हाँ आठ कले आस प्लस टा से करिक जाई छी मु त कहिता जो 10% कर देई था बोली कि सिकला आपण ऐड कर दे भेजिबो अच्छा तापर हम देखा ट्रैवलर्स अकाउंट दैट इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवलर्स अकाउंट besides the literary source we have also I mean in the पढुतिले ancient Indian foreigners the foreign accounts जेमते हमें पढुतिले मेगास्थनीज पढुतिले इंडिया पढुतिले बा फाइयान पढुतिले से they are the foreign travelers who visited India during that time they had given their own eyewitness account similarly we have to depend upon the travelers accounts those who visited during the Sultanate period or during the medieval age to India medieval period जो पर्यटक माने भारत को आसीथिले सेमानकर जो eyewitness account से छाड़ी जाइछंती तांका भीतर जे one of the most prominent visitor to India during the medieval period he was Ibn Battuta. Ibn Battuta. He was a visitor. He was an adventurer and a traveler from Morocco. He belonged to Morocco. जेमती चाइना रो आसीथिले ग्रीस रो आसीथिले आमेन एंशिएंट पीरियड रे फॉरेन विजिटर्स जो माने ट्रैवलर्स माने सेमती इब्न बतूता ही बिलोंग टू मोरक्को he came to India during the time of Muhammad bin Tughlaq he came to India during the time of Muhammad bin Tughlaq so whatever he has seen what are the experiments of Muhammad bin Tughlaq का जो एक्सपेरिमेंट करथिले
जो कपर करेंसी करथिले, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करथिले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करथिले, बट एवरीथिंग, बट लास्टली ही फेल्ड इन ऑल हिज मिशंस. So whatever he has observed, he has seen, he has described in his book Ibn Battuta. He came during the time of Muhammad bin Tughlaq. से जोटा बही लिखिचंती से बहीर ना कौन जो थे कि से मोहम्मद बिन तुगलकर जो अचीवमेंट्स थिला, जो फेलियर एक्सपेरिमेंट्स थिला, ताकू से सिथिरे दर्शाइचंती. दैट बुक इज नोन एज रेहला. रेहला, इट वाज रिटन बाय Ibn Battuta. Rehla. It is written in which language? Rehla. It is written in Arabic language. So, author koi the foreign travelers, they have given their own eyewitness account, which serve as one of the most important source of information for the medieval Indian history. जो वैदेशिक पर्यटक माने भारत को आछन विभिन्न समय से मध्ययुग भारत इतिहास काल रे जो माने आछन सेमानकर प्रत्यक्षदर्शी विवरणी, व्हाट एवर दे हैव सीन इन इंडिया, दे हैव रिटन डाउन इन दैट ओन अकाउंट, एंड दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. से भितरे जे प्रथम थिले से इब्न बतूता. ही केम फ्रॉम मोरक्को. ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ही हैज सीन इन हिज ओन आईज द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ताकर की परीक्षण करथिले ताको कह जाउची ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स बोली कह जाउची. प्रथमे गोटे परीक्षण करंती, परवर्ती काले ताको पुनी परिवर्तन करंती. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल काले दिल्ली रु देवगिरी और दौलताबाद ताको पुनी ट्रांसफर काले दिल्ली को. सो व्हाटएवर ही हैज सीन, हाउ फार ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, ही हैज डिस्क्राइब्ड इन द बुक दैट इज नोन एज रेहला, एंड इट इज रिटन इन अरबिक लैंग्वेज. अरबिक भाषा रे लिखा हिसी से बहिटा. आउ जने थिले कि ही वाज अनदर फॉरेन ट्रैवलर हु केम टू इंडिया in the 15th century. He was Abdur Razak. Abdur Razak in 15th century. पंचदश शताब्दी रे आसीथिले भारत को आउ जने पर्यटक बा फॉरेन ट्रैवलर. ही इज नोन एज अब्दुल रजाक. ही केम ड्यूरिंग he came from Persia. He came from Persia, Iran. अब्दुल रजाक कुआडे आसीथिले से समय 15th सेंचुरी रे. आमे त नॉर्थ इंडिया रे देखले जेते बेले सुल्तानेट रूल अछि, सेते बेले साउथ इंडिया रे को माने थिले द विजयनगर एम्पायर. इट वाज इन साउथ इंडिया. ही केम टू द विजयनगर एम्पायर in South India. So Abdur Razak, he was a Persian traveler. He came to India during the 15th century. Mainly, he visited to the royal court of the Vijayanagar Empire. Vijayanagar साम्राज्य रे से दक्षिणात्य रे थिले से समय. So whatever he has seen, he has described in his own accounts. It is the one of the most important source of information for the Vijayanagar Empire. Vijayanagar साम्राज्य रा the political history, the economic history, the religious history, everything he has described in the in his own accounts. Abdul Razak. The accounts are na kichi nahi. Whatever he has seen, he has described in a written form regarding the Vijayanagar Empire in South India. दक्षिणात्य जो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य पुनी पढ़िबा तमर अछि कृष्णदेवराय अछि विजयनगर साम्राज्य. जेते हम पढ़िबा साउथ इंडियन एम्पायर जोटा विजयनगर एम्पायर अछि, कृष्णदेवराय थिले. So the accounts of Abdul Razak, that is written, he came from Persia. It is written in Persian language and regarding the Vijayanagar Empire. इति इन्फॉर्मेशन हमको सिथे मिलुछि. ता छडा आउ के आस्तिले मार्को पोलो. Another foreign visitor, he is known as Marco Polo. Marco Polo किए तांका विषय कि सुनि जानि छ किछि? He was a navigator. Navigator Marco Polo. Navigator. He came from Venice. मार्को पोलोंकर अचीवमेंट कौन अच्छी?
Marco Polo, he came from Venice and he visited some parts of Western India as well as Eastern India, and whatever he has seen, he has written about the lifestyle of the common people. साधारण लोकंकर अवस्था कौन थिला से समय ताकु से लिखिचंती वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया रे लोक मानकर साधारण अवस्था कौन थिला, द जनरल कंडीशन और द condition of the people, local people of West India and East India. Marco Polo, he has described in his own account. आउ जणे थिले ट्रैवलर ताका नाम होची निकोलो कंटी. He was also a voyager. सामुद्रिक पथरे आसिथिले, सामुद्रिक वाणिज्य, सामुद्रिक पथरे, समुद्र पथरे आसिथिले निकोलो कंटी. He visited South India during the 15th century. 15th century रे से भारत रे आसिथिले. He mainly visited the South Indian states. दाक्षिणात्य जो राज्य से गुडी से भ्रमण करी आसिथिले. The socio-economic condition of the people of South India he has described in his own account. Nicola Conti, he was a voyager, माने समुद्रिक पथरे से आसिथिले, जल पथरे आसिथिले भारत भ्रमण रे in 15th century. He has also left his own eyewitness account of South India. ए सब छडा आम पाखे आउ कोन अछि, ये सब गला फॉरेन sources of information. Indian source of information कोन अछि? What are the Indian sources, the indigenous sources of information regarding the media of India? निकोलो कंटी कोन से आसिले? निकोलो कंटी कितना इंफॉर्मेशन आई से विषय रे? निकोलो कंटी बिलोंग टू इटली. निकोलो कंटी ही बिलोंग टू इटली. He belonged to Italy. लिखिचंती तार इनफॉरमेशन नाही, खाली लिखि व्हाटएवर ही हैज सीन इन साउथ इंडिया, मेनली इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया लोक मान जहां से देखिले द कॉमन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ताकू खाली से ऑब्जर्व करिसंती. जहां रिटेल इन्फॉर्मेशन दिने कोन देखि से कोही कोन ना कोन से इन्फॉर्मेशन नाही. वॉयेजर साउथ का फेर आसिले. ही रिमेन इन साउथ इंडिया and फॉरेन लिटरेचर गला, फॉरेन अकाउंट्स गला, तारे अरबी लिटरेचर हमर जे कोन अछि भारतीय साहित्य व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन दोछि हमको रास्ता में. How it is अच्छा. इंडिजिनस लिटरेचर भितर हम देखले राजतरंगिणी, दैट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. इट इज रिटन बाय कल्हण, द ग्रेट पोएट ऑफ कश्मीर. He has written the Kashmir genealogy. Kashmir राजवंशावली विषय रे से सूचना दिछंती. The political history or the chronology of the rulers of Kashmir, that is राजतरंगिणी. राजा मान हेले राज, तरंगिणी हेला नदी. कहा परि के कहा नदी एमती बही बही चली से को राजा पर को राजा शासन करथिले, दैट इज राजतरंगिणी. दैट पॉलिटिकल जेनियोलॉजी ऑफ कश्मीर. ता छडा हम पाखे आउ कोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अछि? Another book is Prithviraj Raso. That is another source of information.
पृथ्वीराज रासो के लिखछन एटा क्वेश्चन आसी मुझे देखी क्वेश्चन आसबार मैं कौ 1718 बेलू बोधे हु वाज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इट इज रिटन बाय चांद किए कहब चांद बरदाई है ना मन अच्छी चांद बरदाई ही हैज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो रे कौन लिखाई हाँ दैट इज द लव स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान that is known as the पृथ्वीराज रासो it is known as the historical romance पृथ्वीराज चौहान का हिस्टोरिकल रोमांस को नहीं दो बुक दैट इज पृथ्वीराज रासो इट इज रिटन बाय चांद बरदाई इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान विथ मोहम्मद घोरी राजपूत एंड मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे ना राजपूत विथ मोहम्मद घोरी So Prithviraj Raso, that is the historical romance written by Chand Bardai, and regarding the conquest of Prithviraj Chauhan in between the Rajput and the Mohammad Ghori. Mohammad Ghori और राजपूत मान के भितर जो संघर्ष से संघर्षर कहानी जोटा कि अछि चांद बरदाई के रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ रे बही रे that is another source of information of medieval India. ता छड़ा it also provides the social, political and economic history of the Rajputs. राजपूत मानकर political history, social history and economic history of the Rajputs. पृथ्वीराज रासोरे सेमानकर राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था संपर्क में वर्णना रही दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो एटा बुझिला पृथ्वीराज रासो एटा क्वेश्चन खाली आसे हम देखिछि पृथ्वीराज रासो के लिखिचंती माने बुक्स एंड ऑथर्स भितर पृथ्वीराज रासो थिबा एपटे थिबो चांद बरदाई केते गोटे बहिरे सब उल्टा लिखि दीची चांद बरदाई को लिखि दीचंती से माने होचंती ऑथर पृथ्वीराज रासो होचंती बुक गोटे केमती भूल प्रिंट गोटे हेछि देखिबो जदी को बही के पढुथिबो काल देखिबो गोटे भूल प्रिंट हेछि उल्टा पलटा हेछि सो चांद बरदाई ही इज द ऑथर एंड पृथ्वीराज रासो दैट इज द बुक दैट इज द हिस्टोरिकल रोमांस ऑफ पृथ्वीराज चौहान बेसिकली इट डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राजपूत एंड मोहम्मद घोरी ता छड़ा एथिरे पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द राजपूट्स दे आर आल्सो डिस्क्राइब्ड इन द पृथ्वीराज रासो आउ कौन रहिला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम पाखरे सो फार एज द दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द medieval history that is the sultanate period तापर हम देखिबा मुगल हिस्ट्री मुगल पीरियड रे कोन अछि हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुगल हिस्ट्री प्रथम देखिबा बाबर नामा that is another source of Babur Nama that is the greatest source of information so far as the Mughal political history is concerned. Babur Nama केल कोन एटा बाबर नामा टा कोन बाबर लिखछथि बाबर लिखछथि ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर he himself he has written बाबर नामा बाबर नामा होछि बाबरकर आत्मजीवनी that is one of the most important source of information on the Mughal history on the Mughal period ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा अच्छा आउ कोन अछि बाबर को विषय जानिया पई हम पाखर आउ कोन इंफॉर्मेशन अछि बाबर नामा को आउ गुटी मते कोन ना अछि तार द अदर नेम ऑफ बाबर नामा इज बाबर नामार आउ गुटे ना कोन अछि तुजुक-ई बाबरी तुजुक-ई बाबरी another name of Babur Nama that is Tujuki Baburi that is the autobiography of Babur Babur Nama or Tujuki Baburi they are same Tujuki Baburi Babur Nama they are same written by Babur it is the autobiography of Babur को लैंग्वेज लिखा है तुजुकी बाबरी in his mother language mother tongue
चागटाई टर्क चागटाई कौन डायनेस्टी बाबर को डायनेस्टी को चागटाई डायनेस्टी ना कौन बाबर थिले हां ना सुन के चागताई तुर्क से थिले बाबर तेणु ताकर लैंग्वेज होची तुर्की लैंग्वेज चागटाई टर्क चेंगिज खान कर थिले आउ जन कर थिले कहर ही वाज रिलेटेड फ्रॉम हिज हां चेंगिज खान कर थिले आउ सेपटे तैमूर कर थिले से माने थिले चागटाई तैमूर जो थिले तैमूर लंग से थिले चागटाई टर्क ताका डायनेस्टी होची चागटाई टर्क तेणु चागटाई टर्क होची लैंग्वेज तुर्की लैंग्वेज रे से लिखिथिले चागटाई टर्क तुजुकी बाबुरी दैट इज रिटन इन हिज ओन मदर टंग दैट इज चागटाई टर्क so that is the source of information regarding the history of the period of Babur then Babur का समय रो जो राजनीतिक इतिहास so far as the Mughal history is concerned we have to in order to know about the political history or during the time of Babur we have to depend upon the Babur-Nama or which is otherwise known as Tujuki Baburi that is written by Babur himself and that is written in the Chagatai Turk language that is his own mother tongue तापरे हुमायून का विषय जानिया पे पर कोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अछि ये ला बाबर का सोर्स हुमायून का विषय रे कोन जानिया पे कोन अछि बाबर नामा बाबर लिखिचंती सेमती आ गुटे बही अछि हुमायून नामा ताको के लिखिचंती तुजुकी बाबुरी एटा होचे आ गुटे नेम तार आ गुटे अदर नेम ऑफ बाबर नामा दैट इज तुजुकी बाबुरी एटा हला चागटाई टर्क तुर्की भाषा चागटाई टर्क माने तुर्की लैंग्वेज टर्किश लैंग्वेज लिखाई छी तुर्की भाषा रे लिखाई छी हां तुजुकी बाबुरी दैट इज रिटन इन चागटाई तुर्क बा तुर्की लैंग्वेज रे बाबर के परे आसिले के हुमायून हुमायून के भी जाने हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज हुमायून नामा किंतु हुमायून नामाटा कोन ऑटोबायोग्राफी ना बायोग्राफी बायोग्राफी बाबर नामा होची बाबर कर ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी किंतु हुमायून नामा दैट इज नॉट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायून दैट वाज रिटन बाय के लिखचंदी गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम सी हैज रिटन हुमायून नामा गुलबदन बेगम पुनी किए who was Gulbadan Begum she has written Humayun Nama she is the sister of Humayun बाबर कर पुआ और झियो हुमायून और ताका नाम होची गुलबदन बेगम so Humayun Nama it has written by his sister she was Gulbadan Begum तेणु हुमायून जो अचीवमेंट हुमायून कृतित्व कौन थिला से सब से हुमायून नाम रखाई लिखाई हुमायून नामा दैट इज आल्सो अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो फार एज मुगल हिस्ट्री इज कंसर्न आउ थे कहि दुछि जहा कहले पर्यंत मुगल हिस्ट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन बाबर ही द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी सो इन ऑर्डर टू नो अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ बाबर वी हैव टू डिपेंड अपॉन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी व्हिच इज नोन एज बाबर-नामा इट इज रिटन बाय हिमसेल्फ Babur-Nama it is in other words it is also known as Tujuki Baburi it is written in his own mother tongue that is Chagatai Turk after Babur we have to depend upon Humayun Nama in order to know about the political contribution in order to know about the political achievements of Humayun so far as Mughal empire is concerned तेणु मुगल शासन काल रे हुमायून का कृतित्व कौन थिला ताको जानिया पहिले हम पाखरे चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज हुमायून नामा बट as the name indicates it is not the autobiography of Humayun it is a biographical sketch by his own sister and she was Gulbadan Begum थिले हुमायून का भौणी जे कि लिखिचंती हुमायून नामा तेणु बाबर का विषय हुमायून का विषय क्लियर हैला तापर आसीबा अकबर के जानिया पे यहाँ कौन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अछि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अकबर नामा भी अछि
Akbar-Nama, that is a chief source of information. हाँ, हुमायून-नामा, हाँ सेटा तो किसी नहीं. हुमायून-नामा written in which language? हुमायून-नामा देखिबा सेटा मु बाबू. So in order to know about the achievements of Akbar, we have to depend upon that is the Akbar-Nama. Akbar-Nama किए लिखछन्ति? Abul Fazl. Akbar-Nama, it is written by Abul Fazl. Abul Fazl किए? He is the court poet of Akbar. Akbar, हाँ, Akbar का court poet जन थिला Abul Fazl. He has written Akbar-Nama. ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ କୁ ପଢିବା. Akbar-Nama, it is divided into 3 volumes. Akbar-Nama, it contains 3 volumes. तीनोटी भागरे विभक्त. Akbar-Nama जो बही, that is written by Abul Fazl, the court poet of Akbar. The first volume, it deals with the ancestors. Akbar-Nama, it is divided into 3 parts, into 3 volumes. The first volume, it deals with the ancestors of Akbar. Akbar पूर्व पुरुष माने कौन थिले, को माने थिले, सेमान का विषय लिखा है. Second हैला, the second part, it deals with Akbar's chronological rule. कहाँ पर कौन कहाँ पर के what are the achievements of Akbar chronologically. Akbar's chronological achievements. Achievements of Akbar in a chronological order. They are found in the second part of the Akbar-Nama. And the third part, it is known as, the third part is known as Ain-e-Akbari. The third part of the book, it is known as এটা কোড যাব Ain-e-Akbari. The third part is known as Ain-e-Akbari. Ain-e-Akbari টা কোন পুনি? Administration. Ain-e-Akbari. It deals with the administration and statistics. Ain-e-Akbari. So this is the information so far as Akbar is concerned. So we have to depend upon the Akbar-Nama written by Abul Fazl, and Akbar-Nama, it is divided into 3 parts. The first part, it deals with the ancestors of Akbar. Akbar का पूर्व पुरुष माने कौन थिले बा पूर्व पुरुष जो history genealogy of Akbar, it is found in the first part of the Akbar-Nama. The second volume, the second part, it deals with Akbar's chronological achievements. Akbar का कृतित्व कौन थिला, कहाँ पर कौन ताकर कृतित्व थिला, से सब सिंहासन आरोहण ठारू Akbar का कृतित्व सब रही second part रे. The third part, it is known as Ain-e-Akbari. It is also written by Abul Fazl. Ain-e-Akbari, it deals with the administrative system and the statistical information that is there in the third part of the third volume of the Akbar-Nama. Statistical information as well as the administrative system. So this is about the history of Akbar. These are the sources on Akbar's history. Tapare okay. तापर आसिले अकबर का पर किए जहांगीर. So in order to know about the history of Jahangir, we have to depend upon
The book that is known as कौन जहांगीर का बहिर ना कौन तुझो की ई जहांगीरी, that is the autobiography. तुझो की जहांगीरी, that is the autobiography of Jahangir. एथरे से कौन देखे चंदी what he has described in his autobiography, his wars. He has described his wars, rebellions, and how he suppressed those rebellions. जो विद्रोह देखा देता है, विद्रोह के दमन करथिले, तापरे conquest, economy condition, economy. So these are described in his Tuju Ki Jahangiri, that is the autobiography of Jahangir. That is the chief source of information regarding the history of Jahangir. तापर आसिले शाहजहान. शाहजहान का विषय रे कौन बही अच्छी information हम पाखरे? What are the information so far as Shahjahan's reign is concerned? That is Padshah-nama. Padshah-nama. So that is the source of information regarding the achievements of Shahjahan. এটা কোনসি জনে ব্যক্তিଙ୍କ দ্বারা লেখা হয়নি। পদশাহনামা ইট ইজ এ কম্বাইন্ড এফর্ট অফ হিজ जो माने कोर्ट पोएट माने थिले शाहजहानकर। इट इज ए कम्बाइंड एफर्ट ऑफ द कोर्ट पोएट्स। इट इज ए कम्बाइंड एफर्ट ऑफ द कोर्ट पोएट्स ऑफ शाहजहान। शाहजहान राजसभा जो माने थिले कवि सेमानकर मिलित उद्यम रे एटा लिखा हितिला पदशाहनामा। दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पदशाहनामा। शाहजहाननामा that is also a biographical sketch of the court poets of Shahjahan। शाहजहाननामा एटा मध्ये ऑटोबायोग्राफी मध्ये नुह। शाहजहाननामा भी किए लिखिछि तापर कोन निर्दिष्ट लेखक केही नाहंती। इट इज ए कंबाइंड एफर्ट गोटे ग्रुप एफर्ट होची ताकर जो माने राज्यसभा जो माने कवि माने थिले साहित्यिक लेखक माने थिले सेमानकर कंबाइंड मिलित उद्यम रे लेखा हितिला शाहजहाननामा गोटे आ गोटे पदशाहनामा। नो पर्टिकुलर ऑथर of the book is found। कई जने निर्दिष्ट व्यक्ति जे कि लिखि नाहंती शाहजहानकर एई पदशाहनामा बा शाहजहाननामा। so that is the chief source of information regarding the Mughal history। so these are the literary source, these are the foreign accounts or the travelers account which gives us information regarding the history of the medieval India। जे मध्ययुगीय भारत इतिहास को जानिबे केला हम एई सब मुख्य उपादान गुडा को परे निर्भर करबा को पड़िबो। ता छडा so far as the archaeological source is concerned, the monuments which are constructed during the Mughal period mainly, they also give us information regarding the history of that particular period। उनका रेड फोर्ट हैला शाहजहान का रेड फोर्ट कि आगरा फोर्ट हैला शाहजहान का, that gives us information regarding the history of that period। जोडी पीकॉक थ्रोन थिला मयूर सिंहासन थिला रेड फोर्ट भितरे। दीवानी आम देवानी खास, they give us information regarding the administrative system of Shahjahan। देवानी खास और दीवानी आम टा कोन इट इज ओपन फॉर द कॉमन पीपल वेयर शाहजहान ही गेव हिज जस्टिस। जोटी शाहजहान मयूर सिंहासन ऊपर बसी कि ताकर लोकमान को न्याय प्रदान करथिले, दैट एरिया दैट चैम्बर इट इज नोन एज देवान-ई-आम। इट इज ओपन, इट इज मींट फॉर द कॉमन पीपल एंड देवान-ई-खास ओनली द इनवाइटीज, ओनली द नोबल्स, ओनली द रिच पीपल, दोज हु जे हमर लोकसभा राज्यसभा जिन अछि हम कहउछथि अपर हाउस लोअर हाउस आगर कह जाउथिला सेमती देवान-ई-आम देवान-ई-खास। देवान-ई-खास इट इज मींट फॉर द nobles or the rich people
and the Dewan-i-Am, it was open for the common people, those who came with their own problems. Raja semanakar samasya समाधान करथिले, सेमानको न्याय प्रदान करथिले, he gave justice. So we have to depend upon the archaeological remains like Red Fort hela ki Qutub Minar hela. There are the archaeological remainings which are found in different parts of India. They also give us information regarding the history of the particular period or the particular ruler. Humayun's tomb gote achi Delhi re, Humayun's tomb. तापर आ गोटे अकबरंकर अच्छी फतेहपुर सिक्री, पंचमहल गोटे अच्छी, पंचमहल जोटी तानसेन थिले, अकबरंकर तानसेन थिले द सिंगर, सेठी से गीत गाउथिले पंचमहल रे. जो बुलंद दरवाजा साउदर्न एक्सपेडिशन अकबरंकर इन मेमोरी ऑफ साउदर्न एक्सपेडिशन दाक्षिणात्य अभियान स्मारक स्वरूप बुलंद दरवाजा तैयारी करछंती फतेहपुर सिक्री रे. द गेट वे सेटा गोटे विराट बड़ गेट गोटे बुलंद दरवाजा, सेठी तारी सामना रे अछि पंचमहल. पंचमहल म्हणजे 5 स्टोरी बिल्डिंग, ता ऊपर तानसेन गीत गाउथिले. सो अकबरकर जो रिमेनिंग्स अछि, टूम्स रहिछि, सासाराम रे शेरशाहकर रहिछि, दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सेथि मध्ये हम जानि परिबा से समयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर विषय रे. सो मेनली द आर्कियोलॉजिकल सोर्स, द लिटरेरी सोर्स एंड द फॉरेन ट्रैवलर्स, दे गिव अस देयर इंफॉर्मेशन regarding the medieval Indian history. तो यही सब गुड़ाक मुख्य उपादान पर निर्भर कर जानिपारे भारतर मध्ययुग भारत इतिहास जोटा कि सुल्तानेट पीरियड और मुगल पीरियड. तापर हम पुणी नेक्स्ट क्लास आरंभ करिबा अरब इन्वेजन ऑफ सिंध. फर्स्ट चैप्टर सेटा थिबा बोधे अरब मानकर सिंधु अधिकार. ता भितर पुणी हमर आहुरी मझिरे रही जाईची जो पाळ आ राष्ट्रकूट से मानकर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल गोटे चैप्टर ता भितर अछि, सेटा पुणी पढिया ता संगे एका संगे. ठीक अछि. इटा ना गोटे खाली मन रखिबो को गुडा सब अछि बुक्स एंड अथर्स होछि मेन. से बही गुडा के तुमको अथर का ना पर लागिबो, मिनाजु सिराज लागिबो, तुझी की बाबुरी लागिबो, सब एका भले आसे लागिबो ना गुडा को. सेटा टिके मन रखिबो. बुक्स तो मैचिंग रे गोटे पढि पारे एमति जदी पढिबो टोटल ए चैप्टर भितर प्रीलिम्स कथा कहले खाली मैच द फॉलोइंग, मैच द अथर्स विथ द बुक्स एमति गोटे पढि पारे. तापर से चैप्टर तो पढिले हम परे पढिबा डिटेल पढिबा से असु सेमान के विषय रे.